Hello everyone, my name is Mayank Jhunjhunwala and I am a BTech student at IIT Kanpur. So today I'm going to discuss chemical kinetics chapter with you from NCERT. So it's basically a chapter where we deal with the speed of a reaction. Um, like in thermodynamics, we deal uh, with the functions like Gibbs free energy, enthalpy and all. In this chapter, we deal how fast the reaction proceeds. So, firstly, we will discuss the theory part and then we will move on to the exercise. Okay, so let's start. Chemistry batch managers concern change. See, the feasibility of a chemical reaction can be predicted by thermodynamics, but how fast the reaction can proceed is what we study in chemical kinetics here. So, see, chemical kinetics. What chemical kinetics answers us is the how fast the rate of a chemical reaction is. For example, how rapidly food gets spoiled as written here, and how rapidly fuel burns in an auto engine, etc., etc. Means how basically the speed of the reaction. It itself is there in the name only, chemical kinetics. So kinetics is a Greek word which itself means speed. So that is study here. Now, what is the rate of a chemical reaction? Rate of a chemical reaction basically tells us how fast or slow a reaction is. Like, to be more specific, we can say that the rate of decrease in concentration of any of the reactants or rate of increase in concentration of product. मतलब किस स्पीड से reactants consume हो रहे हैं और किस स्पीड से products बन रहे हैं, उस चीज के रेट को अपन लोग बोलते हैं rate of chemical reaction. So we can define rate of chemical reaction in terms of reactants also and in terms of products also. So to define rate, rate is always something divided by time. So for reactant, it is changing concentration of reactant divided by time taken, and for product, it is changing concentration of product divided by time taken. But remember here one thing, that in case of reactants, we take a negative sign because the reactants are consumed as time proceeds. So delta R is negative. So we already take a negative sign to counterpart with the negative part. So this is the definition of rate. For product, we take positive sign only because concentration of product increases with time. Now, what is the average rate of reaction? Average rate of reaction is like rate of reaction is something which is differential. Like we have to check it at every moment. But average rate is nothing but final concentration minus initial concentration divided by total time taken. We don't have to consider what has happened between these 2 points. Like if initial concentration is here and final concentration is here, you don't have to worry how it reached there. You have to just subtract the final concentration with the initial concentration and divide it by time, then you will get the average rate of reaction. Okay. फिर यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन के मोल पर लीटर होती है, टाइम की होती है सेकेंड. सो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर पर सेकेंड, which is an important thing. You should remember this. Then to express the rate of a particular moment of time, we determine the instantaneous rate. जैसे मैंने बोला, इसमें अपन लोग differential form को use करेंगे dr by dt. Here we have to consider the change in rate at every particular moment. So we use dr by dt, and again negative sign because concentration of reactant is decreasing with time. So minus dr by dt is equal to dp by dt. क्योंकि जितना reactant consume होगा उतना ही product बनेगा. So this thing you should remember, that for instantaneous rate, minus dr by dt is equal to dp by dt. The rate of reaction, for example, this reaction is rate of consumption of mercury minus delta G by delta T is equal to minus delta Cl2 by delta T is equal to delta HgCl2 by delta T. Because it is product, so we are using positive sign, and in these two cases, these are reactants, so we use a negative sign, and then we move ahead. Similarly, here for HI case, remember one thing, if there is some coefficient in the reaction, then we have to divide it by that coefficient. Otherwise, we will get wrong answer, because here, if 2x amount of reactant is consumed, then 1x amount of H2 is formed. So it already depends upon the coefficient of the reaction. So you have to divide by coefficient if there is any. So here in this case, minus 1 by 2,
del HI by del T is equal to del H2 by del T is equal to del I2 by del T, and we can proceed further. So I hope you're understanding it. Remember one thing, this is addition. That doesn't mean that you have to add here. The rate of formation of H2 is equal to rate of formation of iodine. This thing you have to apply here. So don't forget it. Similar way we can do in this reaction. Now, what are the factors that influence the rate of a reaction? There are many factors which influence the rate of reaction. We will study one by one. Firstly, how do we write the rate expression? To write the rate expression, we take the reactants and we apply in the superscript, or what we say power is their coefficients. Like if something is rate of A, B, matlab here like C, the reactants are A and B, so we write A and B. And what is the power? Power is X and Y. These X and Y need not to be equal to the coefficients. Remember this thing, this is very important. जो अपने react के expression में A B के पावर में जो आएगा, that is not necessary कि वो coefficient के बराबर हो. X is not equal to A and Y is not equal to B. They may be equal, but it is not necessary. It solely depends upon the chemical reaction. आपको chemical reaction करके देखनी पड़ेगी कि वो A पे कैसे depend हो रहा है, B पे कैसे depend हो रहा है. आप coefficient से पता नहीं लगा सकते हैं. Here X is not equal to A and Y is not equal to B. It is not at all necessary. So we write the rate in minus dr by dt is equal to K, A power X and B power. So and K is the respective proportionality constant. So rate law is the expression in which reaction rate is given in terms of molar concentration of reactants, with each term raised to some power, which may or may not be same as the stoichiometric coefficient of the reacting species in a balanced chemical reaction. ठीक है, तो x और y necessary नहीं है कि वो a और b की equal हो, तो इस बात को ध्यान रखना. फिर लाइक इसमें अपन लोग देख सकते हैं जैसे कि ये एक रिएक्शन है, NO plus O2 is giving out NO2. तो NO के लिए जो NO की जो कंसंट्रेशन है पर मोल लीटर वो ये है, और O2 की ये है. अपने को क्या चाहिए? अपने को चाहिए रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2. तो अपने को ये चार्ट दिया हुआ है, अब अपने को पता करना है कि वो NO की कितनी पावर पे डिपेंड करता है और O2 की कितनी पावर पे डिपेंड करता है. तो कैसे करेंगे अपन लोग? ऐसी दो कंडीशन लेंगे जिसमें O2 की कंसंट्रेशन सेम रखी हो. इन दोनों में सेम रखी है तो अपन लोग देखेंगे NO की कंसंट्रेशन डबल करने पे NO2 की कंसंट्रेशन में क्या फर्क आ रहा है. जैसे कि यहाँ पे NO की कंसंट्रेशन हम डबल कर रहे हैं तो NO2 की कंसंट्रेशन 4 टाइम्स हो जा रही है. इसका मतलब NO के स्क्वायर पे डिपेंड करता है वो. क्यों? क्योंकि जब इसकी डबल हो रही है तब NO2 की 4 टाइम्स हो जा रही है, तो इसको डबल करने पे इस पे 4 टाइम्स हो जा रही है. इसका मतलब इट डिपेंड्स अपॉन द second power of concentration of NO. And similarly for O2, we will take two same conditions for NO like 0.60 and 0.60, and here it changes from 0.3 to 0.6 double, but rate changes from 0.384 to 0.768. matlab it just doubles. So on doubling the concentration of O2, keeping the concentration of NO to be same, we are finding that the rate of formation of NO2 is becoming double. So since doubling O2 is also doubling the formation of NO2, it means that it is directly proportional to O2 power 1, because as we double the concentration of O2, concentration of NO2 is also doubled. So it depends on the single power of O2. So rate law will be like NO power 2 and O2 की power 1. Here it is coming equal to the stoichiometric coefficients, but it is not at all necessary. It will differ going ahead. Like here it is equal to K NO2 to the power 2, O2 to the power 1, because doubling NO2 concentration is making because doubling NO concentration is making NO2 concentration 4 times, and doubling O2 concentration is making NO2 concentration also double. So it depends on power 1 of O2 and power 2 of NO. So this is a rate, and I'm writing it in differential form. We use minus dr by dt, as I told you, because reactants are being consumed. In the similar way, like here, this stoichiometric coefficient is 1, but Cl2 power half, because it does not depend upon stoichiometric coefficient. Here also, H2 power 0, but here H2 coefficient is 1. So you have to see that by doing the reaction, there is no other way. Hence, the sum of powers of the concentration of the reactants is in the rate law expression is called the order of the chemical reaction.
मतलब x plus y का जो sum आएगा उसको अपन लोग बोलते हैं reaction का order. This is also important. You will be given the reaction and you will be asked to tell us the order, tell the order. So you have to just add the powers of the A and B given in the rate law. So x plus y is the order of the respective chemical reaction. Like here, calculate the overall order of the reaction. इसमें हो जाएगा half plus 3 by 2. Here it would be 3 by 2 minus 1. Simple. Okay. We know the rate law is given by k a power x and b power y. So here k is what? K is called the rate constant. And to calculate the value of rate constant, we can easily divide the rate by ax and by, and we can easily get the value of k. So zero order reaction means the order is 0, first means 1, second order reaction means 2. So for calculating the unit of rate constant, k की unit calculate करने के लिए अपन लोग क्या करेंगे? Rate की unit क्या होती है? रेट की यूनिट मैंने आपको पहले बताई थी, इट इज मोल पर लीटर पर सेकंड. सो मोल पर लीटर पर सेकंड डिवाइड बाय a power x and b power y. Since it is zero order, so it is mole per liter because concentration की power concentration की जो यूनिट होती है मोल पर लीटर, उसकी पावर में 0 क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है. तो इस टाइप से जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो यूनिट होगी वो मोल पर लीटर पर सेकंड होगी. सिमिलरली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में बाकी सब सेम रहेगा, बस यहाँ पे 0 की जगह 1 आ जाएगा एंड सेकंड ऑर्डर में यहाँ पे 0 की जगह 2 आ जाएगा. इन द सिमिलर वे वी कैन कैलकुलेट the rates of unit constants, other units of rate constants, and we can move ahead. Now molecularity. What is molecularity? The number of reacting species taking part in elementary reaction which must collide simultaneously in order to bring about a chemical reaction is called the molecularity of a reaction. Now molecularity is not or need not be equal to order. मतलब जरूरी नहीं है कि molecularity और order बराबर होंगे. They can be different. Molecularity basically define क्या करती है? Molecularity basically define करती है कि कितने reactants आके आपस में भिड़ रहे हैं, combine हो रहे हैं chemical reaction करने के लिए. The number of reacting species which take part in elementary reaction. Elementary means complex ना हो, मतलब ऐसी कोई reaction ना हो जो 4-5 reaction को मिलके बन रही हो. जो single reaction होती है उसको हम लोग बोलते हैं elementary reaction. तो जितने reacting species आके collide कर रहे हैं, that defines the molecularity of a reaction. Okay. जैसे कि बायोमोलिकुलर रिएक्शन में दो कंबाइन करते हैं, इन्वॉल्व साइमल्टेनियस कोलिजन बिटवीन टू स्पीशीज. फॉर एग्जांपल डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड हियर एंड ट्राइमोलिक्यूलर, क्योंकि यहाँ पे 2H आ रहा है इसलिए ये हो जाएगा बायोमोलिकुलर. NH4N2 में सिर्फ सिंगल मोलिकुलर है, ये ट्राइमोलिकुलर है क्योंकि यहाँ पे दो NO के मॉलिक्यूल्स आके एक O2 से कोलाइड कर रहे हैं. इसमें ध्यान रखना, इसमें जो आपके कोफिशिएंट्स होंगे रिएक्शन के उनका सेमी मोलिकुलरिटी होता है, तो इस चीज में मोलिकुलरिटी इजी है. And one more thing, molecularity cannot be greater than 3 because it can reach up to 4, but it can't be greater than that because if we are trying to collide 5 molecules, then they will not collide in proper symmetry and reaction will not happen. So molecularity cannot cross the value 3, means more than 3 molecules can't collide simultaneously. And for taking complex reaction, we have to divide the complex reaction in different elementary reactions and then we have to move ahead for calculating the molecularity. Okay. Now what is the RDS, rate determining step? The most slowest step of the entire reaction. मतलब आप कोई reaction जो steps में हो रही है, तो जो step सबसे ज्यादा टाइम लेता है उसको हम लोग बोलते हैं rate determining step, because उसी के चक्कर में reaction का rate determine होता है. जितनी जल्दी वाला step होगा उतनी जल्दी अपनी reaction complete होगी. So RDS, rate determining step, is nothing but just you can say that the slowest step in the reaction is known as the rate determining step. So this is RDS, and first the rate of formation of amine intermediate will determine the rate of the reaction. And order of reaction is experimental quantity, as I told you. It can be 0 and even a fraction, but molecularity cannot be a 0 or non-integer. ये बात ध्यान रखना, molecularity कभी fraction नहीं हो सकती, कभी 0 नहीं हो सकती. It can be just 1, 2, 3. And order is applicable to both elementary as well as complex reaction, whereas molecularity is applicable only for elementary reactions. As I told you, for complex reactions molecularity has no meaning, क्योंकि complex reaction में बहुत सारे molecules आपस में कोलाइड करेंगे तो उसमें molecularity कोई meaning नहीं रह जाएगा क्योंकि symmetry बिगड़ जाएगी. So order is experimental quantity. It can be 0, it can be half, it can be 3 by 2, मतलब it can be fraction, but molecularity cannot be 0 or non-integer. And order is defined experimentally, and it is
applicable to both elementary and complex reactions, whereas molecularity is applicable only to elementary reactions. Okay. Then for complex reaction is order is given by the slowest step. मतलब RDS का जो order होगा वही complex reaction का order होगा, very important. And molecularity of slowest step is same as the order of the overall reaction. Okay. Then now we are coming to integrated rate equations. इसमें क्या करेंगे, इसमें अपन लोग हर ऑर्डर की रिएक्शन लेंगे, जीरो ऑर्डर की, फर्स्ट ऑर्डर की, सेकंड ऑर्डर की, और उनका इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखेंगे, जिसको अपन लोग बाद में डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट करके मतलब एक फाइनल इक्वेशन निकाल सकते हैं उस रिएक्शन के लिए. जैसे कि जीरो ऑर्डर में क्या करेंगे, आर से पी जा रहा है तो रेट का जो एक्सप्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के r power 0. Why power 0? Because it is zero order reaction. So it would be k r to the power 0, and since it is r to the power 0, so we can write it to be equal to 1. So minus dr by dt is equal to k. Dr is equal to k dt with a negative sign. So r is equal to kt plus 1 on integrating it. So r is equal to kt plus 1. Then on moving ahead, where I is the constant of integration, equal to 0, the concentration of reactant we can take equal to R naught. So for calculating the value of R naught, we will take T equal to 0. So here from at T equal to 0, we are getting R naught to be equal to 1. So R is equal to minus KT plus initial, which is equal to R naught, which we calculated to be equal to 1. So we can write K equal to R minus R naught upon T. This is the final rate expression for zero order reaction, and I would recommend you to learn this because this will be useful in many of the questions coming ahead. So I think you should learn this. Derivation is simple. As I told you, you have to just take order to be equal to 0 and you will get minus dr by dt equal to k, and then you can proceed further. So this is the required expression for zero order reaction with a negative slope, because r is coming with negative sign, so slope would be negative, and you will divide by the time period t. Then zero order reactions are relatively uncommon because they occur in the special conditions. Decomposition of gaseous ammonia is a zero order reaction at high pressure. like its examples है जिसको आपको याद करने पड़ेंगे. In this reaction, platinum metal acts as a catalyst. High pressure metal surface gets saturated with gas molecules, so often the change in reaction conditions is unable to alter the amount of ammonia on the surface of catalyst, making rate of reaction independent of concentration. ठीक है. बाकी थर्मल कॉम्पोजिशन ऑफ HI इन फुल सरफेस भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है. तो ये दो तीन एग्जांपल्स है जो आपको याद होने चाहिए. फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे चलेंगे. तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? फर्स्ट ऑर्डर में अपन लोग क्या करेंगे, जस्ट r की पावर 0 की जगह r की पावर 1 ले लेंगे. So here we will get our rate law to be equal to this thing, dr by r is equal to k dt. Then we will integrate this and we will get ln of r is equal to minus kt plus some constant which is known as the constant of integration. And on solving it, we will get the final form to be equal to k equal to 1 by t ln of r naught by r, where r naught is the initial concentration and r is the concentration at any time t. So to calculate the value of rate constant, you have to divide by time in which r naught changes to r, where r is the concentration at that time. Okay. फिर at time t1, the reaction is this much. At time t2, this is this thing. So at any particular time, if you don't want to take r naught to be equal to initial concentration, then you can take r1 by r2, where r1 is the concentration at time t1 and r2 is the concentration at time t2. So k is equal to 1 upon t2 minus t1 ln of r1 by r2. Okay. Then if you don't want to write in the form of log, you can also write in the form of e. So r is equal to r naught e power minus kt, where t is the time and r naught is the initial concentration. You have to just take anti-log both sides and you can easily arrive to this equation. Okay. Then y is equal to mx plus c, and these are the examples of first order reaction, like we form ethane from ethene. So we take H2 as the reactant and C2H4 as the reactant. So here the rate will depend upon C2H4 and it will depend upon C2H4. So it will be K C2H4 power 1 because it is a first order reaction.
And very important thing, all radioactive reactions are first order reactions. All radioactive decay follow first order kinetics. You have to remember this anyhow because this is of utter importance. Radioactive decay of unstable nuclei takes place by first order kinetics. Remember this thing. Now the plots again, since the ln of R naught by ln R slope is negative, so we get this type of graph. And with time, we can get this because k is equal to 1 by t ln of R naught by R. So on implying it on XY graph, we will get this type of graph. Remember one thing, this is for ln R versus t, and this is for log of R naught by R versus t. Both are different graphs, so don't get confused in this thing. Now this is an example which we will be doing in our question part. Now coming to half-life. What is half-life? Half-life of a reaction is the time in which concentration of reactant is reduced to वन हाफ ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन. मतलब जो आपने किसी भी रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन ले रखी है, जितने टाइम में वो कंसंट्रेशन आधी हो जाएगी उसको हम लोग बोलते हैं हाफ लाइफ. हाफ लाइफ का फॉर्मूला सिंपल होता है ln 2 by k in case of first order reactions. At t half r concentration of r is equal to r naught by 2. मतलब जो कंसंट्रेशन है वो इनिशियल की आधी हो जाएगी. जैसे कि अगर अपने को फर्स्ट ऑर्डर में निकालना है तो फर्स्ट ऑर्डर में जो होता था क्या होता था, फर्स्ट ऑर्डर में होता था k इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन अपॉन टाइम. अब अपने को t हाफ चाहिए तो अपन लोग फाइनल कंसंट्रेशन को इनिशियल कंसंट्रेशन के आधे रख देंगे, मतलब r नॉट माइनस r नॉट बाई 2 तो हो जाएगा r नॉट बाई 2 बाई k. सो t हाफ इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस इज इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाई 2k. इसको याद रख लेना. एंड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इट वुड बी ln 2 by k. इसको भी अपन लोग निकाल सकते हैं कैसे, जो फर्स्ट ऑर्डर का रेट लॉ है उसमें r नॉट बाई r में r की जगह r नॉट बाई 2 रख दो तो व्हाट यू विल गेट ln 2 and 2.303 by k, and multiplying 2.303 by log 2 you will get ln 2. So ln 2 by k is the required t half for first order reactions, and the value of ln 2 is 0.693, so you can keep it as it is. So t half will come to be 0.693 divided by k for first order reactions. Okay, then it can be seen from first order reaction that half life period is constant. कांस्टेंट होता है क्योंकि ln 2 by k सिर्फ k पे डिपेंड कर रहा है, जो कि रेट कांस्टेंट है वो रिएक्शन के लिए सेम ही होगा. सो जो हाफ लाइफ है t half, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन एनीथिंग एल्स, इट इज कांस्टेंट इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस. ठीक है, then half life of first order reaction is readily calculated from the time constant and vice versa. Okay, then this is a table for zero and first order reactions which we have just studied, so you can revise it from here if you want. Then comes pseudo first order reactions. What are pseudo first order reactions? जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें ये जो इथाइल एसीटेट है ये H2 के साथ रिएक्ट करके इथाइल इथेनॉल और CH3COH मतलब एसिटिक एसिड बना रहा है. तो इसमें क्या दिया हुआ है, द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर डज नॉट गेट ऑल्टर्ड मच ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन such the reaction behaves as first order reactions. These type of reactions are known as pseudo first order reaction. मतलब ये एक्चुअली में फर्स्ट ऑर्डर नहीं थी, बट लेकिन इसमें क्या हुआ कि जो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है वो चेंज नहीं हुआ क्योंकि अपन लोग H2O को तो सॉल्वेंट मानते हैं और CH3CO CH2H5 को थोड़ा सा डाल देते हैं ताकि अपन लोग रिएक्शन करवा सके. तो H2O की अमाउंट बहुत सारी है, तो बेसिकली रिएक्शन करते समय H2O की अमाउंट अपन लोग ऐसा मान सकते हैं कि चेंज ही नहीं हुई क्योंकि बहुत कम चेंज होती है. तो इस टाइप की रिएक्शन जिसमें अपन लोग एक मॉलिक्यूल को सॉल्वेंट के फॉर्म में लेते हैं और उसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती है और फिर वो सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है, उसको अपन लोग बोल सकते हैं pseudo first order reactions. In the similar way, we can define pseudo second order and pseudo third order reactions, but this thing is not much important. So if you want, you can skip that. Now coming to temperature dependence of rate of reactions. This is a statement you can learn. For a chemical reaction with rise in temperature by 10 degrees, the rate constant is nearly doubled. मतलब जैसे ही अपन लोग टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस से राइज करते हैं, जो रेट कांस्टेंट होता है वो नियरली डबल हो जाता है. ठीक है, उसके बाद RNS इक्वेशन क्या होती है? RNS इक्वेशन के लिए k is equal to a e power minus a by RT. This equation will also be used very much in the coming exercise. Here we can define A. What is A? A is called the frequency vector or the RNS vector, and K is the required rate constant. E is called the activation energy. R is gas constant, and K is the temperature. So this equation is known as the equation, and this equation defines the dependence of any chemical reaction on temperature.
Okay, so K is equal to A equal minus A by RT is called Arrhenius equation, and this equation defines the dependence of any chemical reaction on temperature. Like on a general basis, on rise of every 10 degrees Celsius, the rate of reaction becomes double. So you can check it by putting values in this formula, and rest we will do it further. But this is a graph of reaction coordinate versus potential energy, very important graph. This can be asked in the exam. Here, what we can see, the reactants are at some higher energy than the products. Why so? Because reaction always proceeds in that direction where it tries to lower its energy. So because remember this thing, any system in the universe always tries to possess minimum energy. So the reaction always proceeds in that direction where its energy tends to decrease. So always reactants. So here reactant is at higher position than product, and if inverse happens, then you have to proceed the reaction by providing some energy. It will not happen by its own. So these type of reactions you have to remember that in these cases delta H is lower for products than for reactants, and this distance where the reactance energy is increased to something and we get an activated complex. This is called an activation energy. What is this energy? Activation energy is the minimum amount of energy needed for the reaction to proceed. मतलब अपने को रिएक्टेंट्स को पहले एक्टिवेशन एनर्जी इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी तभी जाके वो रिएक्शन प्रोसीड करेगी. तो जब अपन लोग एक्टिवेशन एनर्जी देते हैं देन रिएक्टेंट्स फॉर्म एन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ऑफ हायर एनर्जी देन their initial state. So reaction potential energy firstly increases and then decreases, coming to products where the energy of products is even less than the energy of reactants. Okay, so this is the case here, and delta H is the required difference in energies. On this axis, we take the reaction coordinate, and here we take the potential energy, required potential energy. Then some energy is released when the complex decomposes to form products and all. So the final enthalpy of the reaction depends upon the nature of reactants and products. This thing is okay. And this is Stephen-Boltzmann curve. What this thing represents? See, on y-axis we are taking fraction of molecules, and on x-axis we are taking kinetic energy. What we can see is this is the graph, general graph, and on increasing the temperature by 10 degrees Celsius, we can see that the graph comes down and it shifts slightly to the right side. Why so? Because the fraction of molecules, uh, which are at temperature T plus 10, that fraction of molecules increases matlab there are more molecules with a greater kinetic energy if we increase the temperature by 10 degrees Celsius. This is the basic thing which this Maxwell graph shows. The area shows that fraction of additional molecules which react at T plus 10. मतलब 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने पे कितने मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है वो ये चीज दिखाता है. तो बेसिकली जैसे अपन लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं देयर आर सम अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है. मतलब पहले से इतने ये ब्लैक बॉक्स में थे इतने मॉलिक्यूल्स थे टी डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन टी प्लस 10 पे क्या हुआ ये ग्रे वाले मॉलिक्यूल्स और आ गए इस काइनेटिक एनर्जी पे. सो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस. बाकी जो k इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ए बाई आर के था उसको मैंने लॉन के फॉर्म में लिखा. दोनों तरफ लॉन ले लिया देन आई विल गेट लॉन k इज इक्वल टू माइनस ए बाई आर टी प्लस लॉन है. Then I can define its graph taking 1 by t on x-axis and ln k as my y. We will get minus E by R as our slopes. Slope is negative, so we are getting negative slope graph, and ln A will be our intercept. So this thing, this height from 0 to this thing is known as ln A, which we call as an intercept, like y is equal to mx plus c type of thing. So y is equal to ln k, m is equal to minus E by R, x is equal to 1 by t, and c is ln A. So in this way we can proceed, and similar way we can take ln k2 minus ln k1 is equal to a by rt1 minus a by rt2. That ln a term will vanish, so we can get this form of equation. So ln k2 by k1 is equal to a upon 2.303 r 1 by t1 minus 1 by t2. So from here we can define rate constant for two different reactions k2 and k1 for the same reaction at two different temperatures. This formula is also very important, asked frequently in exams. You will be given the value of k1, you will be given the value of t2 t1, and you will be asked to find the value of k2. मतलब आपको t1 t2 की वैल्यू दी जाएगी, k1 की वैल्यू दी जाएगी,
और आपको K2 निकालने को बोला जाएगा, हो सकता है आपको K2 K1 T1 T2 दिया हो, आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालने को बोला जाए. So this formula is important actually. You can learn that if you want. Then comes the effect of catalyst. See, what a catalyst actually does is catalyst tries to mm, proceed the reaction in a faster way by taking it from some other way. Like if a reaction is taking 2 hours to complete, then it is possible that with the help of catalyst, that reaction can be done in a single hour instead of 2 hours. How? Because catalyst proceeds the reaction by taking it from some different path. Like here, without catalyst, we have to give this much activation energy. But with catalyst, we have to give just this much activation energy, and the reaction is completed in a faster manner. Like it reduces the time for reaction. So what catalyst basically do? Catalyst क्या करता है? Catalyst activation energy को reduce कर देता है, किसी दूसरे पाथ से रिएक्शन को प्रोसीड करता है, जिससे कि उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है. अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी तो रिएक्शन जल्दी प्रोसीड करेगी. सो कैटलिस्ट का बेसिकली यही इफेक्ट होता है. बाकी अपन लोग वैसे भी कैटलिस्ट पढ़ते ही हैं, जैसे कि अपन लोग अमोनिया की फॉर्मेशन में आयोडीन को कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं. यहाँ पे KClO3 का डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? KClO3 इज डिकम्पोजिंग टू KCl and O2. सो इन केस में अपन लोग मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 को कैटलिस्ट की फॉर्म में लेते हैं. तो बेसिकली आपसे ये पूछा जाएगा कैटलिस्ट का काम क्या होता है. सो कैटलिस्ट रिड्यूसेस द एक्टिवेशन एनर्जी so that reaction can proceed in a faster way with a lower energy. Catalyst does not alter the a very important thing. Catalyst cannot alter gives free energy delta G of reaction. It catalyzes the spontaneous reactions but does not catalyze non-spontaneous reaction. Catalyst कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई रिएक्शन हो नहीं रही है तो उस रिएक्शन को प्रोसीड करवा दे. कैटलिस्ट हमेशा जो रिएक्शन होती है उसकी स्पीड रिड्यूस कर सकता है, मतलब उसकी स्पीड बढ़ा सकता है, मतलब रिएक्शन जल्दी खत्म हो सकती है. लेकिन कैटलिस्ट कैन नॉट कैटलाइज द नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, मतलब जो रिएक्शन हो ही नहीं रही है वो कैटलिस्ट की वजह से नहीं हो सकता. और कैटलिस्ट कैन नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन. इट जस्ट हेल्प्स इन रीचिंग द इक्विलिब्रियम, यू कैन से फास्टर. मतलब आप जल्दी से इक्विलिब्रियम में पहुंच जाओगे, लेकिन वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को नहीं छेड़ता. मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू वही रहेगी. क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज नथिंग बट KF/KR, मतलब फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड. तो कैटलिस्ट जिस रेट से फॉरवर्ड रिएक्शन को फास्ट करता है उसी रेट से वो बैकवर्ड रिएक्शन को भी फास्ट करता है. मतलब it helps in attaining the equilibrium faster. It catalyzes the forward as well as the backward reaction in the same way. So equilibrium constant पे कोई फर्क नहीं आता. It just helps in reaching the equilibrium faster. So this is the effect of catalyst on activation energy. Remember this thing. This is of very important. Now, coming to collision theory, what collision theory says, the number of collisions per second per unit volume of the reaction mixture known as the collision frequency is Z. Z क्या होता है? देखो, जो अपना K का फॉर्मूला होता है वो होता है A e⁻A/RT. तो जो A होता है उस A में दो तीन चीजें होती हैं. एक होता है Z. Z होता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी. कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है? कितने कोलिजन हो रहे हैं एक सेकंड में एक यूनिट वॉल्यूम में, उसको अपन बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी. और उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं Z से. फिर Z के बाद इसमें एक फैक्टर आता है, ये एक फैक्टर आता है सिमेट्री का. मतलब कितने कोलिजन हो रहे हैं सिमेट्रिकली. मतलब ऐसा तो हो सकता है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में भिड़ रहे हो, लेकिन उनको भिड़ना भी एक पर्टिकुलर सिमेट्री में पड़ेगा, तभी जाके वो दोनों प्रोडक्ट बना पाएंगे. मतलब ऐसा नहीं है कि दे आर कोलाइडिंग एंड मूविंग अहेड. मतलब ऐसा नहीं है कि कोलिजन हो गया कोई फर्क नहीं पड़ रहा. ऐसे कोलिजन भी ऐसा होना चाहिए कि प्रॉपर सिमेट्री में आके वो कोलाइड कर रहे हो, तभी वो कोलिजन काम का होता है. हमेशा ध्यान रखना कि जितने भी कोलिजन होते हैं सारे कोलिजन आर नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट. वही कोलिजन इंपॉर्टेंट होते हैं जो एक प्रॉपर सिमेट्री के साथ हो रहे होते हैं. तो जो अपना आर्डेनियस इक्वेशन में ए वाला टर्म होता है ना, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, here we take into account collision frequency Z and also that symmetry factor which tells us that they are colliding in a proper symmetry. So this is the thing which we study in collision theory. इसको अपन लोग बोलते हैं effective collisions. To facilitate breaking of bonds between reacting species and formation of new bonds, we need effective collisions where the reactants collide in a proper symmetry. ठीक है, विद सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी. हाँ, एक और इम्पोर्टेंट थिंग है, उसमें एनर्जी भी सफिशिएंट होनी चाहिए. मतलब ऐसा नहीं कि कोलाइड करके उनकी सारी एनर्जी खत्म हो रही है, उनको कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाना है. सो दे मस्ट बी हैविंग सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी. ऐसा नहीं कि वो कोलाइड करके छूट जाए. दे मस्ट बी हैविंग प्रॉपर सिमेट्री, प्रॉपर काइनेटिक एनर्जी,
then only a collision can be considered as, then only a collision can be considered to be fruitful for converting into product. So this thing is important. तो ये थी अपनी कोलिजन थ्योरी। यहाँ पे चैप्टर की थ्योरी खत्म होती है। बेसिकली चैप्टर में अपने को रिएक्शन के ऑर्डर से मतलब है, रिएक्शन किस ऑर्डर से प्रोसीड कर रही है। बाकी आर्गेनाइज इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी कैन मूव अहेड टू सॉल्व द क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। From the rate expression for the following reactions, determine their order of reaction and determine dimension of the rate constant. Okay. तो मैंने आपको बताया था कि अपन लोग रिएक्शन से पता नहीं कर सकते कि जो अपना रिएक्शन का ऑर्डर है वो क्या है। तो अगर अपने को रिएक्शन का ऑर्डर पता करना है तो अपन लोग क्या करेंगे, जो अपना रेट का एक्सप्रेशन है उसमें अपन लोग देखेंगे कि रिएक्टेंट के ऊपर कौन सी पावर है। जो रिएक्टेंट के ऊपर पावर होती है उनका सम जो होता है वही अपना रेट कौन, वही अपना रिएक्शन का ऑर्डर होता है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में जो अपना रेट है वो है के एनओ की पावर 2। सो हेयर द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 2। In second part, the rate is equal to K H2O2 power H2O2 power 1 and I minus power 1. So here the order of the reaction can be told as 1 plus 1 2, क्योंकि यहाँ पे H2O2 की पावर में 1 है, I minus की पावर में 1 है। So overall rate is 1 plus 1 that is equal to, overall order is 1 plus 1 that is equal to 2. Similarly in third case it is equal to 3 by 2. In fourth case it is equal to 1. And then what we are asked the dimension of rate constant. Rate constant is nothing but K. K क्या होता है? K को मैं डिफाइन कर सकता हूँ रेट अपॉन n2 की पावर n2 का स्क्वायर। रेट का अपने रेट का मैंने आपको बताया था, रेट का जो यूनिट होता है वो होता है, इसमें एक पार्ट अगर करूँ तो फर्स्ट पार्ट में अपने को दिया हुआ है रेट इज इक्वल टू K H2O2 I minus, so K into square, so we can define K equal to rate divided by n2 square NO2 ठीक है। तो इसको अपन लोग क्या कर सकते हैं, इसमें अगर अपन लोग इसकी यूनिट लिखें तो रेट की यूनिट मैंने आपको बताई थी, रेट इज इक्वल टू मोल पर लीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई NO2 की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर का स्क्वायर हो जाएगा मोल की पावर 2 एंड पर लीटर की पावर भी 2, मतलब L-2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो मोल और एक मोल कट जाएगा तो हो जाएगा मोल पावर -1, लीटर पावर -1, लीटर पावर -2 will cancel and we'll get liter power -1 in denominator. So that will become liter power 1 and second inverse. Okay. So this is our required unit for this section. Now we are asked the dimension. So what would the dimension? Dimension would be mole multiplied by liter. Liter is nothing but volume and L minus 2 is S minus 1 is second, so it would be time. So you can write the dimension accordingly. ठीक है, so moving ahead, इस तरीके से अपन लोग डायमेंशन लिख लेंगे सबकी। तो इस टाइप से फर्स्ट क्वेश्चन अपना हो जाएगा। फिर अपन लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड में क्या बोला है, फॉर द रिएक्शन दिस, अपने को के दिया हुआ है और अपने को बोला कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। सिंपल, रेट दिया हुआ है, रेट का फॉर्मूला अपने को पता ही है, अपने को के पता है, अपने को इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए पता है, बी पता है, अपने को बस फॉर्मूले में रख के रेट निकालना है। ये तो सिंपल ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू के कितना दिया हुआ है, 2 into 10 power -6, सॉरी 2 into 10 power -6 multiplied by concentration of A, which is 0.1, multiplied by concentration of B का square, that is equal to 0.2 का square, 0.2 multiplied by 0.2. So this thing is equal to this thing is, sorry, multiply. Okay, so what we will get, 10 power -3 from here, 10 power -9. So 2 into 2 into 2, 8. 8 into 10 power -9 is our answer. 8 into 10 power -9, ठीक है, तो ये अपने रेट का आंसर है। उसके बाद उन्होंने बोला कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर ए इज रिड्यूस्ड टू 0.06 मोल पर लीटर। मतलब जब कंसंट्रेशन ऑफ ए 0.06 मोल पर लीटर हो जाती है तब अपने को बताना है। ठीक है, ओके।
तो मूविंग अहेड, उसका सेकंड पार्ट करना बाकी था ना। तो क्या बोले, कंसंट्रेशन ऑफ ए इज रिड्यूस टू 0.06 मोल पर लीटर। इनिशियली कितनी, इनिशियली 0.1, तो कितना रिड्यूस हुई, रिड्यूस इन कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू 0.1 माइनस 0.06 दैट इज इक्वल टू 0.04, इतनी कंज्यूम हो गई। ठीक है, तो बी कितना कंज्यूम होगा, अमाउंट ऑफ बी कंज्यूम, ए की चेंज होगी तो बी की भी चेंज होगी। तो देखो अपन देख सकते हैं कि ए जब ट्वाइस कंज्यूम होता है तब बी सिंगल कंज्यूम होता है। तो अगर 0.04 ए अगर 0.04 कंज्यूम हुआ है तो बी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा 0.04/2 दैट इज इक्वल टू 0.02, इतना बी कंज्यूम हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ बी कितनी हो जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ बी is equal to initial concentration which is 0.2 minus 0.02, that we will get 0.18. Okay, so we have the concentration, required concentration 0.18. Now we want to calculate the rate. So again that rate is equal to k will remain constant. K is equal to कितना दिया हुआ है, 2 into 10 power minus 6, 2 into 10 power minus 6 multiplied by concentration of A, which is equal to how much, 0.06 multiplied by concentration of B का स्क्वायर, मतलब 0.18 multiplied by 0.18. So what we will get on solving, we will get to be equal to 3.89 multiplied by 10 power minus 9 and right, उसमें ऊपर भी यूनिट, इतना मैंने ऊपर यूनिट नहीं लिखी थी, यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी मोल, रेट की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस हिसाब से अपने वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बाकी वैसे अपन लोग सारे कर लेंगे। फर्स्ट वाले में मैंने डायमेंशन बताई दी थी आपको, ये फर्स्ट वाले की डायमेंशन, वैसे अपन लोग बाकी डायमेंशन निकाल लेंगे। सिमिलर वे में सेकंड वाला क्वेश्चन भी अपना हो गया है। अपन लोग चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड में क्या बोला, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लैटिनम सरफेस is a zero order reaction. What are the rate of production of NNH if N2H2 if K is given to be this thing? Okay, तो पहले तो अपने को रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। रिएक्शन क्या होती है, ये तो डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया की बेसिक रिएक्शन है। हाँ, इसमें वो लोग कहीं कहीं पे आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आपकी रिएक्शन आनी चाहिए, तो जो बेसिक रिएक्शन है उनके बेसिक रिएक्शन से वो आपको आनी चाहिए बेसिकली। सो रिएक्शन ये होती है, टू अमोनिया, ये गैसेस फॉर्म में होता है। दिस थिंग विल ब्रेक डाउन टू गिव, इसको मैं स्मॉल कर देता हूँ, N2, again N2 is a gas, plus 3 times H2। ठीक है, तो ये रिएक्शन होती है। तो इसमें पहले तो मैं रेट लिखूंगा, तो कैसे लिखूंगा, मैंने आपको बताया कोफिशिएंट होता है उसे डिवाइड करते हैं, मतलब -1/2 d ऑफ NH3 by dt। नेगेटिव साइन इसलिए, नेगेटिव साइन इसलिए क्योंकि रिएक्शन कंज्यूम होता है, मैंने आपको बताया था, इज इक्वल टू, यहाँ पे कोफिशिएंट तो 1 ही है तो सीधे से लिख दूंगा dN2/dt इज इक्वल टू 1/3 dH2/dt। ठीक है, तो इस तरीके से ये मेरा रेट का इक्वेशन होगी, इक्वल टू सम कांस्टेंट k। ठीक है, तो अपने को क्या बोला है, अपने को दिया हुआ है क्वेश्चन में
कि जो मेरी रेट ऑफ रिएक्शन है वो 2.5 इंटू 10⁻⁴ के बराबर है, मतलब दिस थिंग इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, ये रेट ऑफ रिएक्शन ही होती है ना, तो इसको मैंने इस फॉर्म में लिखा। अब मेरे को जो निकालना है मैं निकाल सकता हूँ। एक चीज ध्यान रखना, जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है डी आर बाई डी, जिसको अपन लोग बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू के, वो अपने क्वेश्चन में दिया हुआ है 2.5 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। आप अपन यूनिट से भी देख सकते हैं, मोल पर लीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। दिस थिंग इज इक्वल टू के, दिस थिंग इज इक्वल टू दीज थिंग्स। नाउ फ्रॉम हियर वी कैन राइट, न्यू क्या चीज अपने को चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ N2H2। तो डी एन टू तो 2.5 इंटू 10⁻⁴ के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, क्योंकि जो इसमें कोफिशिएंट है वो 1 ही है। DH2 पर जीत निकालने के लिए मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मुझसे पूछा है DH2 पर जीती कितना है, तो DH2 बाई dt इज इक्वल टू 3 टाइम्स 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴। 7.5 इंटू 10⁻⁴, 7.5 multiplied by 10⁻⁻⁴. Okay, so this thing is dH2 by dt, and dN2 by dt we have to also calculate. So dN2 by dt is equal to dN2 by dt के लिए कोई कोफिशिएंट है ही नहीं, 1 ही है, so it is equal to 2.5 multiplied by 10⁻⁻⁴। ठीक है, तो ये जाएगा अपना dN2 by dt और dH2 by dt। इस तरीके से अपन लोग निकाल लेंगे रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 and H2। सो वेरी सिंपल, यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट विद द गिवन रेट। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ में क्या बोला है, द डिकम्पोजिशन ऑफ dimethyl ether is leads to the formation of CH4, H2 and CO, and the reaction rate is given. The rate of reaction is followed by an increasing pressure in a closed vessel so that the rate can be expressed in terms of partial pressure of the dimethyl ether. ठीक है, if the pressure is measured in bar and time in minutes, then what are the unit of rate and rate constant? Okay, so अपने को रेट की यूनिट पूछी है ना, तो रेट की यूनिट तो अपने को पता है क्या होती है, रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, बट हियर we are given that our rate is measured in terms of pressure. Since it is given that the rate of reaction is followed by increasing pressure in a closed vessel, so the rate can also be expressed in terms of partial pressure. Okay, so अपने को बोलना है कि अपने को रेट की यूनिट बतानी है, बस इस केस में अपने को क्या करना है, इस केस में अपने को कंसंट्रेशन को प्रेशर से रिप्लेस करना है। तो यूनिट ऑफ रेट क्या हो जाएगी, रेट की यूनिट क्या होती है, रेट की यूनिट होती है कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम। इस केस में हो जाएगा प्रेशर डिवाइड बाय टाइम, तो प्रेशर की यूनिट बार और टाइम की यूनिट सेकंड, तो बार सेकंड इनवर्स इज आवर यूनिट फॉर रेट, एंड फॉर रेट कांस्टेंट रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट हो जाएगा रेट डिवाइड बाय बार की पावर 3/2। मतलब इसका सकता हूँ रेट डिवाइड बाय बार की पावर 3/2। ठीक है, तो रेट की यूनिट है बार, सेकंड इनवर्स मल्टीप्लाई बाय बार की पावर -3/2। So what we will get bar power 1 minus 3/2, मतलब bar power minus half second power -1। ठीक है, तो ये अपना इसका आंसर हो जाएगा 3.4 था। सिंपल था, बस अपने को कंसंट्रेशन को प्रेशर से रिप्लेस करना था, देन वी कैन इजीली डू दिस थिंग। देन फिर क्वेश्चन में पूछा है, मेंशन द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। ओके, तो ये तो सिंपल है, इसमें तो मैं आपको डिफाइन कर सकता हूँ। फर्स्ट तो हो जाएगा अपना
टेम्परेचर, रिएक्शन किस टेम्परेचर पे हो रही है. Second, you can say second you can say pressure या फिर concentration, जो भी आप बोलना चाहें. Concentration और pressure of reactants. मतलब concentration तो हो जाएगा उनके केस में, सॉलिड्स के केस में, और प्रेशर हो जाएगा गैसेस के केस में. थर्ड अभी मैंने आपको बताया था, कैटलिस्ट अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन. थर्ड हो जाएगा प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, है ना. फिर फोर्थ हो जाएगा अपना सरफेस एरिया, कितना सरफेस एरिया एक्सपोज है, क्योंकि कुछ ऐसी होती है जो एडजॉर्प्शन से प्रोसीड करती है, तो उसके इसमें सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट भी इम्पोर्टेंट है. सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट. फिर और क्या हो सकता है, और रेडियो एक्टिविटी केस में आप कितने रेडिएशन के आसपास हो वो भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा. तो रेडिएशन एक्सपोजर भी एक केस है. बाकी एक नेचर भी होता है कि आपका रिएक्टेंट आपस में रिएक्टिंग है कि नहीं है, मतलब वो कोइंसिडेंस वाला जो उनका नेचर होता है वो भी अपने को अकाउंट में लेना पड़ेगा. तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स भी इम्पोर्टेंट है. नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. ठीक है. तो ये कुछ फैक्टर्स है जो अपनी रिएक्शन को अपनी रिएक्शन डिपेंड करती है, तो इनको याद कर लेना. फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे. क्या बोला है, रिएक्शन इन सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट. ओके, हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन ऑर्डर अफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड. सिंपल सी बात है, अगर अपन लोग रिएक्शन की रेट को डबल कर देंगे और अपने को बोला है कि जो अपनी ऑर्डर रिएक्शन का 2 है, मतलब वो रिएक्शन की पावर 2 पे डिपेंड कर रहा है, तो डबल का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स. तो जो रिएक्शन का रेट है वो हो जाएगा 4 टाइम्स. सिंपल. ठीक है. क्यों? क्योंकि मैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को डबल कर रहा हूँ और वो रिएक्टेंट की पावर 2 पे डिपेंड कर रहा है, तो डबल का स्क्वायर 4. तो जो रिएक्शन का रेट है वो 4 टाइम्स हो जाएगा. और रिड्यूस टू हाफ में हाफ का स्क्वायर मतलब 1/4 टाइम्स हो जाएगा. ठीक है. सो इट विल रिड्यूस बाय 1/4 टाइम्स. समझ रहे हो ना. अपने को बस स्क्वायर करना है. अगर वो डबल हो जाए तो जो रिएक्शन का रेट है वो इंक्रीज टू 4 टाइम्स जाएगा, मतलब इंक्रीज टू 4 टाइम्स. ठीक है. और अगर मैं उसका आधा कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, जो रिएक्शन का रेट है वो 1/4 हो जाएगा. सो इट विल रिड्यूस बाय 1/4. सो इस वे में अपन लोग सारे क्वेश्चन आगे के भी कर सकते हैं. So मैं एक काम करता हूँ, rest of the questions I will cover in my other session. I hope you have understood it. This chapter is not as such difficult. Uh, just you have to read carefully about that differential and integrated rate laws. The rest all things are easy. What is the rate? What is the rate constant? What are the units? These things are easy. Just you have to take care of that integrated rate law because उसमें बच्चों को परेशानी होती है. Baki, we will do the rest questions in our next session. I hope you understood it. Thank you.